would say with some confidence that I'm looking at the overall picture in the country with a great deal of self-belief, a great deal of confidence. The reason for this is both in common sense and in the trends we are seeing in the country in the course of the first few phases. When I say common sense, it was already very clear when BJP started talking about Ab Ki Baar 400 Par that this was a complete fantasy. That last time in 2019, thanks to the tragedy in Pulwama and the response in Balakot and the conversion of the election from what should have been a referendum on the economic failures of the first term of Mr. Modi, it became instead a national security election in 2019. And as a result, they maxed out in a number of states. You know that in 6 states they won every single seat. In 3 states they won all but 1 seat. In 2 states they won all but 2 seats. And the Congress was certainly given a very, very resounding defeat in 2019. Now in all those 11 states, those results are impossible to replicate. And we're already seeing this very clearly. Already by the time Kerala voted in the second phase, the news coming from those districts in the north that had voted was extremely encouraging, that the strongholds of the BJP had shown minimal turnout and significant drop in voting figures, whereas where the Congress candidates and the India Alliance candidates had attracted enthusiasm, the voters were coming out in good numbers. Since then, since Kerala voted on the 26th of April, 3 more weeks have gone by, 3 more phases have gone by, and what we are picking up, I must say, is a confirmation of this trend. And we can see this right across the board. Places like Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and even Uttar Pradesh, we are definitely doing significantly better than last time. On top of that, what we're hearing out of Bihar, what we're hearing out of Bengal, what we're hearing even out of a couple of places in Gujarat is not good news for the government and the NDA. So our Atmavishwas has gone up even further. We are absolutely in a positive trajectory going into the last 2 weeks of this campaign. And I just want to say to all of you, the main purpose of this election is to change the government in Delhi. Of course, in our country, every election in every constituency is a combination of national issues and local issues. We fully understand that. But the overriding national picture is one of whether the individual voter is happy with what has been the experience of his family and himself in the last 10 years. And everywhere I go to campaign, I say to people, this election is about you. Are you better off than you were 10 years ago? Have you and your family benefited from any of the decisions taken by Mr. Modi? When he announced 10 years ago that he would create 20 crore jobs, have you or any of your family gained one of those jobs? Are you amongst the 80% of the Indian population that says its income has dropped in the last 10 years? Or are you amongst the 20% whose income has gone up in the last 10 years? When you go to the bazaar, the market, are you able to afford to buy the same things you could afford to buy a few years ago with the money you have in your pocket? Believe me, these questions give you a very clear response. The voters are not experiencing any joy out of this kind of self-examination. And this is changing the election. Yes, you can talk about Ram Mandir, you can talk about various national issues, you can try and distract the voters by raising non-issues, but at the end of the day, all we need to do is remind the voter that the election is about them and their interest, and they should vote according to their interest. This is already happening in many, many places in the country, and we're looking forward to a very good result on the 4th of June. तो मैं वहाँ रुकूंगा और आप जो भी पूछना चाहते हैं, you're most welcome. I just want to give those initial comments to all of you, and then I'm in your hands. Yeah. Ram Tintar Singh from Aaj Tak. Yes, it'd be nice if you told me who you were, but sure. Ji. I'm surprised hear you say that, because wherever we go,
we campaign for all the India Alliance candidates in that particular area. So here I'm speaking in Delhi on behalf of the 7 candidates of the India Alliance, and that includes the 4 from the Aam Aadmi Party. Yes, obviously we all have our own party loyalties, but we know that in this battle we are together. And it is very important for us that the 4 Aam Aadmi Party candidates of Delhi, that the 3 Indian National Congress candidates must get in their constituencies. We want to see the 7-0 result that Delhi gave the BJP the last 2 times. We want them to give it to us this time. देखिए, भाजपा तो आरोप देते ही करेंगे, उनको क्या उपाय है। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस सब जन के लिए है। अगर हमारे मैनिफेस्टो आप पढ़ लेंगे कि कोई भी एक समुदाय के बारे में, एक संप्रदाय के बारे में कहीं नहीं लिखा है। हम कहते हैं कि हम सब लोग के लिए हैं। हम भेदभाव नहीं करना चाहते हैं इस देश के अंदर। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं जो भाजपा करें कि किसी को फर्स्ट क्लास नागरिक मान लो और दूसरों को सेकंड क्लास। इस किस्म की बातचीत इंडिया अलायंस के कोई उम्मीदवार से कभी नहीं आएंगे। हम यही कहेंगे आप लोगों से कि जो भी हम कहना चाहेंगे इस चुनाव में, ये सारे भारतवासियों के लिए, सारे भारत नागरिकों के लिए है। जिस संविधान अंबेडकर साहब ने हमें दिया था, यानी क्या लिखा है कि आपकी जाति जो भी हो, आपका मज़हब जो भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, और आप कहीं से भी आइए भारत से, अगर आप भारतीय नागरिक है तो आपको पूरे भारत में एक ही हक से, एक ही अधिकार से जीने का हक है। तो यही हम चाहते हैं, एवरीबॉडी शुड हैव द सेम राइट्स। हम तो कभी भी कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं टॉलरेट करेंगे। मैं तो एक स्लोगन अगर इस्तेमाल करूं, मैं कहूँगा वी स्टैंड फॉर इंक्लूसिव इंडिया, कि सब लोग को शामिल करके भारत को बढ़ा। जनेन फ्रॉम एबीपी न्यूज। सर, मेरे 2 सवाल हैं। जी, पहला सवाल जो आपसे पूछा गया, मैं उसको थोड़ा सा और सवाल को दोहराना चाहता हूँ। हमने तमाम राज्यों में देखा है इंडिया गठबंधन की साझा रैलियां हुई है, जिसमें कि जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, उनके नेता और कांग्रेस के नेताओं ने साझा रैलियों को संबोधित किया है। दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मंच पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ नजर आए हो। आज तो नहीं हुआ और कल भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। इसकी क्या वजह है? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी, जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए केजरीवाल लगातार रोड शो कर रहे हैं, क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस नेतृत्व नहीं पहुंचा? क्या आपको उन्होंने आमंत्रित नहीं किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, थरोर साहब, स्वाति मालीवाल का जो मामला है, इस मसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप है। कांग्रेस क्या समझती है? क्या स्वाति मालीवाल के मामले पर कांग्रेस का स्टैंड है? और क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिनके आवास में कथित तौर पर यह घटना हुई, उनको इस मसले पर अपनी राय सामने आकर के जाहिर करनी चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि जो आपने पूछा, मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स, उम्मीदवार, सपोर्टर्स जो भी है, वो स्वागत है हमारे राहुल गांधी जी के मंच पे। इसमें ऐसे कुछ नहीं है। हम कभी नहीं कहेंगे कि आइए मत। हमें पता है कि वो लोग नेचुरली बहुत बिजी है उनकी ही कंस्टिट्यूंसी में। उनका तो भी चुनाव लड़ना है ना, और उनके पास 4 है, हमारे पास सिर्फ 3 है, तो नेचुरली उनके नेताओं वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी होगा। लेकिन अगर उनको आने के लिए कोई भी इरादा है, हम बहुत खुशी से स्वागत करेंगे। कभी नहीं कहेंगे कि आपके लिए जगह नहीं, इसलिए हम सब एक साथ हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ रहा हूँ जनेन जी। पहली मीटिंग श्री राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान अशोक विहार की। जी, वहाँ तो थे। और 6 उनके हमारे एमएलए आम आदमी पार्टी के उनके साथ उस मंच को साझा किए थे। राइट। तो इट्स वेरी क्लियर कि हम लोग पूरे कोऑर्डिनेशन से लड़ रहे हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन। वो पहली बात। दूसरी बात, स्वाति मलीवाल के विषय पे पहली बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। शायद केजरीवाल साहब कुछ नहीं कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट है। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं महसूस होता है कि उस पर कुछ ऐड करो। वो लोग जानते हैं कि आखिर क्या, हमारी अपॉइंटी नहीं है वो, तो अगर उनको पता है कि क्या क्या बैकग्राउंड है इसका, उनको ही कहने दीजिए। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये स्वाति मालीवाल विषय को बार बार उठा के भाजपा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो
असलियत है हमारे देश में जो लोग महसूस करते हैं बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे विषय पे चर्चा न हो जाए और इंस्टेड हम सब कहेंगे कि एक औरत को ये हुआ वो हुआ। देखिए, इस देश के भविष्य के चुनाव है। इस चुनाव में हम 140 करोड़ भारतवासियों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और एक व्यक्ति का नहीं। ये व्यक्ति का जो भी मामला वो तो आगे जाने दीजिए, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स जैसे हम कहते हैं, लेकिन हम इस पे ज़्यादा फोकस करने का महत्व हम तो नहीं समझते हैं। Yeah. You spoke about the economic failures of 2019. Right. What do you see this time around? The economic, is there distress? Is there economic inequality? How do you look at, how does the... Right. So in 2019, what I meant, Neville, was that it was in the aftermath of the disastrous demonetization, which had not only deprived large numbers of people of their money and their incomes, but also of their daily employment, all the daily wage workers, the small and micro enterprises that had to shut down because they lived on the daily circulation of money. You have a small little outfit, 2-3 employees, somebody brings a job of work in the morning, you do the work during the day, they collect it in the evening, pay you, you pay your workers. That was the way in which a lot of the informal economy worked. All that shut down. There were literally tens of lakhs, possibly crores of small and micro enterprises throughout the country that were forced to shut down because of demonetization. So we felt 2019 there was a lot of discontent, compounded by the botched rollout of GST, which created a lot of problems, particularly for small traders and shopkeepers. So by 2019 there was massive economic discontent, and it was the ability to convert the narrative into a national security election that gave them the victory of 2019. Today, however, the issues that are facing the Aam Aadmi have actually worsened. There's not been a dramatic new development like demonetization, but there has been a steady accretion in the value of their purchasing power. If you look at the fact that, as I said in my opening remarks, 80% of the Indian population reports a decline in income since 2014, that means that the vast majority of the Indian people are not able to make ends meet, even to the extent that they were able to 10 years ago. Secondly, unemployment has reached critical proportions. Ever since figures started being kept in 1938 onwards, we have absolutely never seen such appalling figures in terms of millions of people unemployed. And the job starting age group of 19 to 24 is the worst hit. 45.4% unemployment in the country. For those who are just coming out into the real world and looking for a job, 1 out of 2 people can't find anything to do. That is a very serious issue. Third, you've had Mr. Modi's notorious now promise that he would double farmers' income. Show me one farmer in India whose income has doubled in the last 10 years, you will not find a single one. So you've got rural distress compounded with the problems I've described, which are nationwide. Finally, this whole business of how far your income can stretch. The BJP takes refuge in macro numbers. We are the largest growing economy, fastest growing economy, largest GDP. But where is that GDP actually reflecting in people's lives? If you look at the fact that people do not have the ability to afford at the marketplace what they could afford a few years ago, we are a very price-sensitive nation level. It may be that by global standards our inflation is not spectacularly high. But by Indian standards, where over 80% of the population spends more than 70% of their income on food alone, then when a tomato or an onion goes up, that really actually affects the daily life of the vast majority of India's people. So talking about global inflation versus Indian inflation is irrelevant to them. It is about whether they can afford that tomato or that onion anymore. Even the BJP taxes fuel, petrol and diesel prohibitively. That affects the prices of everything that the Aam Aadmi is using. The onerous burden of everything from petrol taxes to GST taxes is borne by the ordinary person, whereas the rich in this country are essentially getting away with various kinds of loopholes and tax benefits. So we're looking at a situation where the Aam Aadmi, the ordinary Indian, is hurting in this country. And that's why the economics of this election cannot be wished away by the BJP. They are trying to raise non-issues and other issues. They want to use the media as a weapon of mass distraction. But the fact is that that mass distraction is not going to work
As long as people are reminded to vote in their own interest, the votes are not going to go for the BJP government. सर प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और 25,000 का सेंसेक्स था जब हम 10 साल पहले आए थे, अब वो 75,000 पहुंच चुका है और हम चुनाव जीत रहे हैं और सेंसेक्स और बढ़ेगा। इससे आम आदमी की जीवन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आम आदमी, आप सोचिए कितने भारतवासियों को सेंसेक्स में कोई शेयर्स है। देखिए, ये जो मैक्रो पिक्चर जो कहते हैं प्रधानमंत्री कि हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा है या जीडीपी ग्रोथ बढ़ते जा रहे हैं, इस किस्म की बातें साधारण भारतवासी से पूछिए कि आपका जेब में इसका असर पड़ा है क्या? आपका जेब में पैसे बढ़ गए जब सेंसेक्स बढ़ते जा रहे हैं? क्या आपको ज़्यादा टमाटर प्याज बाजार में खरीदने के लिए पैसे हैं? यही प्रश्न के लिए प्रधानमंत्री को जवाब नहीं होगा, क्योंकि उनको उनकी स्थिति पता नहीं है। ये लोग ऑफिस में बैठ के बड़े बड़े आंकड़े देख रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत देख लीजिए, लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या चल रही देख लीजिए, और लोगों साधारण लोग से पूछिए। मैं तो यही कर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या जो आप 2-3 साल पहले बाजार में खरीद रहे थे आजकल खरीद सकते हैं? और सब लोग कह रहे नहीं हो रहा है, हमारा तनख्वाह बढ़ा नहीं है, हमको तनख्वाह ही नहीं है, शायद कई लोग कह रहे हैं। और हमारे जो रूरल एरियाज़ जो है, हमारे जो किसान परिवार के लोग हैं, कह रहे हैं कि कहाँ बढ़ गए हमारे तनख्वाह। तो इसलिए जब हम न्याय के बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, ये वगैरह, महिला न्याय बड़ी महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि जो अन्याय महसूस करें उनके डेली लाइफ में, उनकी हर रोज़ की ज़िंदगी में जो इतना कठिनाइयाँ, इतना अन्याय महसूस करें, उनके लिए हम न्याय लेके आएँ। ये तो सरकार का फोकस बदलना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों के रेफ्यूज लेके कि उसके इस बहाने में कहते हैं कि सब ठीक है, जब हर भारतवासी के अपनी ही ज़िंदगी में ठीक नहीं लगता है। यही बात है। Correct. Both those comments, let me give you very frankly, on the CPM's politics of violence in Kerala, the Congress has been consistent and consistently outspoken. We have said that whereas there may be good things about the CPM's faith in social justice or their strong attachment to secularism, that we will never condone the politics of violence on which they have frequently embarked. Many Congress workers have been murdered by CPM gundas in the course of the last few decades. And we have been absolutely uncompromising in our condemnation of such behavior. If two people engaged in the act of making an illegal bomb, because they're not a licensed weapons factory, if such people were blown up and killed and they are now being treated as martyrs by the CPM, that shows what kind of violence the CPM